अब करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 12 आगे चैप्टर 3 का पेडोलॉजी ऑफ इंग्लिश का करेंगे एक्सप्लेन क्वेश्चन टू प्रमोट थिंकिंग इन डिटेल्स। सो अगर बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से मतलब सोचना है, डिटेल्स में सोच सकता है, सिर्फ ऊपर ऊपर से यस नो में आंसर नहीं देगा, सोच के आंसर देगा। उस चीज़ के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? Teachers question their students all the time. Question mean that teacher can help their students to learn and learn more. On average, a teacher spends one third of their time questioning student. In one study of the questioning was 60% recalling facts and 20% were procedural, which most answers being either right or wrong, but does simply ask the question that are either right or wrong promote learning. There are many different types of questions that the study can be asked. The response and outcomes that the teacher wants dedicated the type of question that teacher should utilize. Teacher generally asks students question in order to तो मतलब बोल रहे हैं कि क्या टीचर ज़्यादातर कैसे क्वेश्चन करते हैं, यस नो में करते हैं। वैसे हमें यस नो में नहीं करना चाहिए लिमिटेड करना चाहिए, पर ज़्यादातर उन्हें रीजनेबल क्वेश्चन, थिंकेबल क्वेश्चन ऐसे करने चाहिए। Guide students towards understanding with a new topic or material is introduced. Push students to do a greater share of their thinking, reminding an error. Stretch students. Check out understanding. Questioning is generally used to find out what the students know, so it is important in assessing their progression. Questioning can also be used to inspire, extend students' thinking skills, and develop inquiring minds. They can divide it into two broad categories: lower order question, higher order question. So, a lower order question, which involves the recalling of fact and knowledge previously taught, often involving closed question as yes or no. Higher order question, which requires more thinking. They can ask the students to put together information uh, uh, previously learned to for an answer to support an argument in a logical manner. Open-ended questions encourage students to think beyond textbook-based literal answers, thus eliciting a range of responses. They also help the teacher to access the student understanding of content. Important of response in questioning promotes. Many teachers allow less than 1 second before requiring a response to a question and therefore often answer the question themselves or re- rephrase the question. The students only have time to react, they do not have time to think. If you wait for a few seconds before expecting answer, the student will have time to think. This have a positive effect on student achievement. By waiting pose a question, there is an increase in, सो मतलब वही बोल रहा है कि आपको क्वेश्चन पूछ के सिर्फ छोड़ नहीं देना है, फिर ज़्यादातर क्या करता है, क्वेश्चन पूछ के फटाक से हो गया नहीं यार तो बता देता है। हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, हमें वेट करना चाहिए। बच्चे रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्ट करने के बाद थिंक करेगा, थिंक करने के बाद आंसर देगा। The length of the student responses, the number of students offering response, the frequency of students questioning, the number of response from less capable students, positive interaction between students. Positively, you receive all answers that are given. The more students will continue. Most students will continue to think and try. There are many ways to ensure that a wrong answer and misconception are connected. And if one student has the wrong idea, you can be sure that many more have as well. You could try to follow, pick out the part of answer that are correct and ask the students. It is a positive way to think a bit more about their answer. The encouraging more activity participation and help your students to learn from their mistake. The following comments shows how you might respond to an incorrect answer in a supportive way. You are right about evaporation forming clouds. I think we need to explore a bit more about what you said about rain. Can anyone else offer some ideas?
Write on a blackboard all the answers that the students give. Then ask the students to think about them all. Write on the blackboard all the answers that the students give. Then ask the students to think about them. What answers do you think? You an opportunity to understand that the way that you students are thinking, and also give us our students have a unthrilling way to correct any misconceptions that they may have. Value all responses by listening carefully and ask the students to explain further. If you ask for further explanation for all the answer, the right or the wrong, students will often correct by mistake for themselves. You will develop a thinking classroom, and you will really know that learning your students have done to how to proceed. If wrong answer result in humiliating or punishment, then your students will stop trying of fear of further embarrassment or ridicule. तो मतलब बेसिकली हमें उन्हें डांटना नहीं है, फटकारना नहीं है, हमें उनसे अच्छे से पूछना नहीं है, तो अच्छे से एक्सप्लेन करना है। और क्लास में तो सारे बच्चे बोलेंगे तो उनको समझ आ ही जाएगा, फिर भी हमें और अच्छे से समझाना है। अगर हमने उसे डांट दिया फिर करे तो एम्बेरेंस होकर मेरी सबके सामने बेइज्जती होगी, या या फिर वो आगे सोचना ही बंद कर देगा, वो चुपचाप आके सिर्फ खड़ा हो जाएगा, कुछ आंसर ही नहीं देगा अगर हम ऐसा करेंगे तो। So again, developed the quality of response. It is important that you try to adopt a sequence of questions that does not end with the right or wrong answer. Right answer should be rewarded with the following a question that extend the knowledge and provide students with opportunity to engage with the teacher. You can do this by asking for a how or a why. Another way of answer, a pet of word, evidence of। तो मेनली इन सारी चीज़ों से हम जो आंसर दे रहे हैं स्टूडेंट, उसको और भी इजी कर सकते हैं, उसको और भी प्रमोट कर सकते हैं, उसकी थिंकिंग को, डीप थिंकिंग को। Helping students to think more deeply about and therefore improve the quality of their answer in crucial part of your role. The following skill help students achieving more. Promoting requirements, appropriate hints to be given, ones that help students develop and improve their answer. You might first choose to say what is right in the answer and then offer information for the question and other clues. So what would happen if you add a way to end of your paper airline? Probing is about trying to find out more, helping students to carefully what they are trying to say to improve a disorganized answer of one path on one that is partly right. Reinforcing reinforcing is about building one on correct answer to link students knowledge to the knowledge that they have previously learned. सो रिफोर्सिंग मतलब यही होता है कि हम जैसे बच्चे ने पहले कुछ आया था उससे रिलेटेड हमने और कुछ बात बता दी उसे, तो वो क्या होगा, उसको और रिलेट कर पाएगा रियल वर्ल्ड से, ठीक है। सीक्वेंसिंग क्वेश्चन मीन्स आस्किंग क्वेश्चन इन अ ऑर्डर डिजाइन फॉर एक्सटेंडिंग थिंकिंग। अब मतलब सीक्वेंस है, इसको ऐसे एकदम से नहीं पूछ देना कि जैसे कि सॉलिड लिक्विड गैस का एकदम से गैस की प्रॉपर्टी बताओ, नहीं, हम पहले बोलेंगे मैटर क्या होता है, फिर बनाएंगे सॉलिड क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है उनका, लिक्विड बनाएंगे, फिर गैस बनाएंगे, तब पूछेंगे। Sequencing question means asking question in the order strength. Listening enables you to not just look for the answer you expecting, but to alert you to unusual or initiative answer that you may not have expected. It also shows that you value the student thinking, and therefore they are more likely to give thoughtful responses. Such awareness could highlight a misconception that need correct, or they may show a new approach that you had not considered. As a teacher, you need to ask a question that inspire and challenging if you are to generate interest and intensive answer for your students. ओके, हम क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे अपना। Why are the instructions important for teacher, and what things should be kept in mind by teaching while reading some instruction?
इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि पहले हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो अगर हम स्टूडेंट्स को बता रहे हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें अपने ध्यान में रखनी चाहिए. So, reading is a single most important educational skill your students will learn understanding the organization and meant of text and instruction in both phonics and literature is essential to helping your young children read to understand that to understanding the pre-requesting skill of all learning. Teaching can build a solid foundation for their students to learn and succeed in school. Here are some ways to create appropriate of the written words, develop awareness of printed language, teach the alphabet, develop phonological and phonemic awareness, teach the relation of sounds and letter, teach children how to sound out and spell words, and help children to develop fluency, reflective and reading. Create appropriate of the written. Share stories with children and invite them to explore a story magic. Share informational text and invite children to wonder about the new ideas presenting. Take every opportunity to point out the ways in which reading is essential to communications of everyday life. Develop awareness of printing language and the written system. मतलब बुक के बारे में बोल रहे हैं इसमें. मेक श्योर स्टूडेंट्स नो हाउ बुक आर ऑर्गेनाइज. दे शुड बी टॉट द बेसिक अबाउट book that they are read for left to right and bottom to down. The print may be accompanied by pictures or graphic that the pages are the numbered, and the purpose of reading is to gain meaning from the text and understanding ideas that words convey. Read to children from the books with easy to read large print. Use stories. Okay. Teach with the alphabet. A strong predictor of the ease with which children learn to read is her familiarity with the letter of the alphabet. This familiarity is a critical building block of learning to read. It is important to go beyond the knowledge of the name of the some letters. So मतलब जैसे कि रीडिंग करना आना चाहिए. ऐसा नहीं है कि हम जब रीड करते हैं तो सारे वर्ड्स पढ़ते हैं. हम स्टार्टिंग कुछ वर्ड पता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे हमसे इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे हेल्प, दैम, नोटिस. तो हम एक एक वर्ड नहीं पढ़ रहे हैं, NOTICE ऐसे नहीं पढ़ रहे. तो ये चीज़ें बच्चों में अंदर हमें और ज़्यादा डेवलप करनी होती है. Develop the students phonological awareness. Okay, in listening and speaking, we buy attention by the meaning of the language rather than its sound. Okay, to learn to read, however, certain must be taught to attain to the sound or phonological of a language. This is necessary for them to understand how to speak is represented by the print. So basically, जब हम read करते हैं तो क्या करते हैं हम मीनिंग पे ध्यान देते हैं या फिर लैंग्वेज पे ध्यान देते हैं, बट हम मतलब साउंड पे नहीं ध्यान देते. तो हमें साउंड पे भी ध्यान होता है कि उसे प्रोनाउंस कैसे कर रहे हैं, उसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे हो रही है. डेवलप फोनेटिकल अवेयरनेस. अब बच्चों में हम फोनेटिकल अवेयरनेस कैसे ला सकते हैं. फोनेटिकल अवेयरनेस रेफर्स टू अंडरस्टैंडिंग दैट वर्ड एंड सिलेबली आर कंप्रोमाइज्ड ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री स्पीच साउंड्स. दिस अंडरस्टैंडिंग इज एसेंशियली टू लर्न टू रीड एन अल्फाबेटिक लैंग्वेज. In teaching phonetical awareness, the focus of all activities should be on the sound of words, not on the letters और स्पेलिंग. जब हम कुछ पढ़ते हैं तो हमारा क्या होता है, साउंड पे ध्यान ज़्यादा होना चाहिए था इंस्टेड ऑफ लेटर्स, क्योंकि लेटर्स तो ईजी है, आराम से वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो अपने आप बनता है. नॉट हम NOT नहीं पढ़ते हैं, हमें प्रोनाउंसिएशन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए. ठीक है. यूज स्ट्रेटजीज दैट मेक फोनेटिकल prominent in student attention or predictions. For example, model specific sounds such as in the word set. So हमें इस अलग अलग तरीके की प्रैक्टिस करनी चाहिए. ये कुछ पॉइंट्स हैं. अब टीच द रिलेशन ऑफ साउंड एंड लेटर्स. अब हमें रिलेशन से बताना है साउंड्स और लेटर में. स्टूडेंट शुड लर्न द लेटर्स ऑफ अल्फाबेटिक एंड डिस्क्रिमिनेट ईच लेटर फ्रॉम अदर बिकॉज ईच स्टैंड फॉर वन और मोर ऑफ साउंड्स दैट occur in a spoken word. When presenting each letter, model its corresponding sound and have children produce the sound themselves. For children with learning disability, the children
The teacher activity must be exploited and unambiguously. At first, teach and work with only a few letter sound corresponding that have a high quality utility in many words. Teach your children how to sound out words. So after have mastery a few letter sounds corresponding, teacher them to decode words and sound them out. जब बच्चों को कुछ थोड़ा बहुत आ जाता है हम उन्हें खुद बोल सकते हैं कि आप कैसे डिनोट करोगे इस वर्ड को, कैसे प्रोनाउंस करोगे। जैसे हम डिक्टेशन कराते हैं हम स्पेलिंग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, उसी तरीके से हमें वर्ड्स पे भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि बच्चा प्रोनाउंसिएशन कैसे कर रहा है उसकी। टीच चिल्ड्रन टू स्पेल वर्ड्स। अब स्पेलिंग के लिए भी जैसे जैसे कि इसमें कुछ एग्जांपल है, जैसे कि कैप, बैट, सेट, इनसाइड, ठीक है, ऑफ कैप। तो ये सारी चीज़ें हमें बतानी चाहिए, ठीक है। टीच चिल्ड्रन टू स्पेल वर्ड्स बाय साउंडली देयर नेम और बाय ऑन बाय वन मॉडल द साउंडिंग एंड द स्पेलिंग प्रोसेस ऑफ अ चिल्ड्रन एज बाय द स्पेल। हेल्पिंग चिल्ड्रन डेवलप फ्लुएंसी रिफ्लेक्टेंट रीडिंग। अब हम बच्चों को ऐसा कर सकते हैं कि वो किसमें ज़्यादा फ्लुएंट हो जाए, इंग्लिश रीड करने में फ्लुएंसी हो जाए, और रीडिंग पे हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए मुझे तो लगता है, क्योंकि रीडिंग इज़ हेल्प अवर हेल्प अस इन आवर एंटायर लाइफ। कॉज रीडिंग के बिना कुछ नहीं है। सो रीडिंग सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। पर हमारे स्कूल में क्या होता है, आंसर, क्वेश्चन आंसर्स, स्पेलिंग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं instead of pronunciation and reading. So help children learn to read fluently by requiring them to read now stories and reread old stories every day. Help children extend their experience with the word, letters, ideas of a book, relate information on a book to the event of industry as holiday, pets, siblings, games, ऐसे चीज़ों का हम यूज़ कर सकते हैं। सो कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं हमारे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आंसर्स हैं, इन्हें करते हैं। बट इज अ कॉमन प्रॉब्लम ऑफ अवर स्कूल। सो हमने पढ़ा हमारी कॉमन प्रॉब्लम क्या है, ओवर क्राउडेड क्लासेस रूम्स, क्योंकि टीचर हर एक बच्चे पे ध्यान नहीं दे सकता, क्योंकि अगर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे होंगे तो ठीक है। टेक्स्ट बुक शुड भी कैसी होनी चाहिए, ग्रेडेड होनी चाहिए, ठीक है। ट्रेडिशनल तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, रिवर्स्ड भी क्यों होगी, प्रिंटेड होगी, पर सबसे अच्छा क्या है, ग्रेडेड होगी तो ज़्यादा बच्चों को इंटरेस्ट आएगा। पोएट्री इंक्रीज अ चाइल्ड डैश टू ब्यूटी। जो पोएट्री है क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, उसमें हर एक लाइन लाइन का अलग अलग मतलब होता है, ठीक है। अब हमें शायद इसमें ट्रू फॉल्स बताना है। देखते हैं। स्टोरी टेलिंग इज एडवांटेजेस बिकॉज इट इज इंटरेस्टिंग मोड विद हु क्रिएट इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट। बिल्कुल सही है, स्टोरीज पढ़ा के क्या बच्चों को इंटरेस्ट आता है, उसमें हमें देखना पड़ता है हमें जब अपना जेस्चर पॉस्चर कैसे रखना है, ठीक है। तो बिल्कुल ट्री है। ग्रुप सिंगिंग हैज़ नॉट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन पोएट्री टीचिंग। ऐसा नहीं है, बच्चों को जब हम पोएट्री पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को सिंग भी करा सकते हैं, स्ट्रिक्ट टीचर नहीं बनना है हमें, बच्चों को अच्छे से पढ़ाना है। the teacher should pre the teacher should pre-assess the mental development of the student। हाँ, जैसे टीचर को अपने क्लास में पता रहना चाहिए कौन सा बच्चा कम बोलता है, किसमें कौन से बच्चे को कितने लेवल पे समझ आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग सबको एक साथ लेके चल सकता है वो। द टीचर शुड नॉट डू मॉडल सिंगिंग। ऐसा नहीं है, जितना अच्छे से कर सकते हैं उतना अच्छा करना चाहिए, बच्चों का ऐसा इंटरेस्ट बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस आएगा उसके अंदर। ये हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है, अब हम अपने आगे के चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। Thank you.